L into K, where K is the spring constant. So this is indicated horsepower. Then we have the losses, which we say frictional losses, and then we have the term called mechanical efficiency, which can be given in terms of bhp over ihp into 100. That is mechanical efficiency. And if we know the mechanical efficiency and out of bhp or ihp any one power is given, we can calculate the other one. Then from the shaft power, we have in between, we have the intermediate shaft, which is supported on a number of intermediate shaft bearings. So we have some losses which we call as the transmission losses. And therefore we have another efficiency which we call as transmission efficiency, which is after the losses, the power what we get is called delivered power. And transmission efficiency is delivered power over shaft power into 100. Again, if one of the power is known, the second power can be calculated if the efficiency or the transmission efficiency is known. From here we have what is known as the losses in propeller, and therefore another efficiency. Whatever delivered power is not completely available as thrust power, so that is propeller efficiency. And same way, if one is known, second one can be calculated. And finally, the hull efficiency, and that is the effective power. And we have seen that they are all in a sequence, and that is how we have to remember, so that if they will be reducing from IHP, we get little less shaft power, or BHP, then some less delivered power, and then less thrust power, and finally the effective power. So we have done some numericals also yesterday. In continuation of that, we will do, I think, one or two numericals on this particular aspect, and then of course we will move to something else. So let us first share the PPT and do some numerical on this. This was the numerical which we did yesterday. Now we have one more. Let me just make it full screen. Okay. So this is a numerical in front of you. The formula is known. Only thing is you have to calculate. A ship of 15,000 ton displacement has an admiralty coefficient based on shaft power of 420. The mechanical efficiency of the machinery is 83%, shaft loss is 6%, propeller efficiency is 65%. At a particular speed, the thrust power is 2550 kilowatt. Calculate indicated power, shift speed, and effective power if hull efficiency is 98%. So this is the numerical. There is no new formula. All the formulas which are applicable are already known to you. So please solve it. And I hope all of you are doing these numericals, because this one also has come in the past paper. In fact, the next which we will do has also come. Mostly we are covering what has come in previous papers. So don't neglect it and let everybody do it. Although it is much easier in the physical class, where we can see that who is at which stage of solving the numerical. But
in virtual classes, that is a drawback. We can't keep a track on each and everybody in the class. So you have to be sincere yourself because it is for your benefit only. So please do, everyone, because I hear only 2 or 3 students doing the numerical. Although the class is pretty big, I think more than 28 or 29 students in the class, but I hardly find more than 2, 3 doing the numerical and coming up with, if any problem whatsoever they have. The rest all, I don't know whether they're doing or not doing. But it is for your benefit only.
4974.9 पहले का सर फर्स्ट 4.7 4974.9 check. पहले का 4173 First is the indicated horsepower and let us see. 5028.3 sir 5028 5028.19. 5028 is okay. That part is correct. speed 14.23 और 2499 sir effective power 50 approximately I am saying 28 is okay. Shift speed, how much you got shift speed? so 14.23 sir 14.23 is correct. So this is also absolutely sir right. 2499 effective power And effective power 2449. 2499 sir Okay, let me check. 2499 is correct. 2499. So सर ये करके दिखाएंगे एक बार आप हाँ जी क्या somebody said something? यस सर ये करके दिखा दोगे एक बार अच्छा सॉल्यूशन इसका कैसे करना है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी and show how to erase it. I think I have to close it and then it will be erased. Don't save and again open. Where is the PPT? This. All right, so we are here. Correct. This is I just closed it and opened so that whatever I wrote. First of all, let us see. For those who have done very good, but we want to see that everyone does, and you want to know how to do it. So first, always as is the practice, we always write given. The idea here is to know what all is given here. So I can say delta is given. 15000 15,000 ton and keep writing the units as well. So this is available to me. This is a displacement. Now AC admiralty coefficient is 420 also given. Then we have mechanical efficiency. Efficiency mechanical is given to me, which is 83%. This is all given. Then shaft loss is 6%. Therefore, I can say transmission efficiency is given as 94% is available to me. Propeller efficiency propeller is 65%. So I can all these three efficiencies are given already. One more thing is given is the thrust power TP thrust power. Can you see also when I'm writing? Yes. Okay, so this is what data which is already known to us. Now let us start from this value thrust power. So if you see, I gave you a linear thing, IHP shaft power, delivered power, thrust power, effective power. This is the sequence which you have to remember. So for efficiency part. Now we have to see what is given. Thrust power is given. This is known to me.
So I can calculate delivered power. So dP will be thrust power, which is 2550, divided by the efficiency, transmission efficiency, because between thrust power and no, where we have the thrust power is 2550, and we want to calculate delivered power, correct? So we want to calculate. So propeller efficiency is given as divided by 0.65. This will give me delivered power. Once I have delivered power, I can calculate shaft power, which will be delivered power, which I get from this delivered power divided by transmission efficiency, which is 94% because 6% losses. So dP divided by 0.94. This gives me shaft power. So you can keep calculating side by side as we are discussing. So I already know shaft power. Now, once I know shaft power, I know admiralty coefficient formula. Admiralty coefficient is equal to delta raised to power 2 by 3 into V cube divided by, shaft power. Now admiralty coefficient is known to me, 420 is given. Delta I know is given. Shaft power I have already calculated, is known to me. Only thing unknown is V. So I can calculate V from here. That will be item number here, this one. Also shaft power divided by mechanical efficiency, which is here 83%. That means shaft power divided by 0.83 will give me the IHP. So I will know IHP, I will know the ship speed. These two things have been calculated. Last thing is effective power. Now effective power is the last one. So from here to here it will be less. Effective power is less. So efficiency is, I need to know the efficiency, which is 98%. So effective power will be equal to 2550 multiplied by hull efficiency. Correct. So hull efficiency is given. So 2550 into 0.98. This is my last part C. Effective power if hull efficiency is 98. So this is the way we have to do. So is it clear to everyone? Of course, some of you have done it already, but I'm trying to ask those who had some doubt on this. Is it clear how to do it? And I have given you the steps as well. Can you solve it now? Yes. So please do that and let me know if you get the correct answers. Sir, can you please show the answer for this? Which answer you want? A, B, and C. Okay. Answer for A. Answer for B. Answer for C. C is here. Answer for A is 5028. 5028.3 kilowatt. Shift speed is, I think, 15.23, if you remember, 14.23. So 14.23 is the this one shift speed, and effective power 0.98 of that will be 2499. 2499. This is the last one. C, kilowatt. This is knots. So these are the three answers.
Here, as in this numerical, please remember this point always, because nobody can guarantee कौन सा क्वेश्चन आएगा एमएमडी में, बट सिमिलर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड. दैट इज व्हाई even if this is not given, for example, कहाँ गया, a chip of 15,000 based on, now based on shaft power, what is the meaning of this? Have you understood this? Integrated horsepower. No. शाफ्ट पावर लिखा ना, एडमिरल्टी कोफिशिएंट बेस्ड ऑन शाफ्ट पावर. इसका मतलब है कि एडमिरल्टी कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो है AC इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा रेज टू पावर 2/3 इंटू वी क्यूब ओवर पावर. यही है ना, लेकिन कौन सी पावर, ये हमने अभी तक कहीं डिस्कस नहीं किया. तो इसमें शाफ्ट पावर यूज होती है. अब इसमें उसने बता दिया है, क्योंकि वी आर, इफ नोबडी नोज सो मेनी पावर्स आर देयर, तो ठीक है, पावर इज ए, यू कैन से डिवाइडेड बाय पावर. लेकिन नाउ वी नो वी आर डीलिंग विद इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर, वी आर डीलिंग विद BHP, वी आर डीलिंग विद डिलीवर्ड पावर. तो कौन सी पावर आएगी यहाँ पे? तो शाफ्ट पावर ही यूज होती है, ये हमें याद रखना है. वो इसने इसमें इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए लिख दिया है न्यूमेरिकल में, बेस्ड ऑन शाफ्ट पावर. यानी कि इस एडमिरल्टी कोफिशिएंट 420 जो वैल्यू है, इट इज बेस्ड ऑन शाफ्ट पावर, नॉट एनी अदर पावर. बट सपोज इवन इफ इट इज नॉट गिवन, if this statement is not given in, then also you must use shaft power only. ये लिख के रख लो आप, जहां मर्जी लिखना हो, so that अगर एग्जाम में ये सेंटेंस नहीं है और 2-3 पावर है, तो आपको कौन सी पावर यूज करनी है, देयर माइट बी सम कंफ्यूजन. सो रिमेंबर, एडमिरल्टी कोएफिशिएंट फार्मूला, वी आर टॉकिंग अबाउट शाफ्ट पावर. इट इज कैलकुलेटेड बेसिस शाफ्ट पावर. ठीक है, इज दिस पॉइंट well understood? So everybody got it, or still some people are doing it?
Okay, last time I'm asking, anybody is still doing the numerical? Or everybody has solved it? Or anybody has any difficulty? Okay, then we move forward. Let us do the next one. The effective power of a ship is 1400 kilowatt at 12 knots. The propulsive efficiency is 65% and the fuel consumption 0.3 kg per kilowatt hour based on shaft power. Calculate the fuel required to travel 10,000 nautical miles at 10 knots. The propulsive efficiency. Yes. Propulsive efficiency is 65%. What is the question, please? What is propulsive efficiency? That is propeller efficiency. Same thing. Propeller efficiency, because
Sir, 645. 645 is what? Fuel in, you must say always with units. 645 tons. No, 374 you can say, 373.8 or 375. 374. Sir, daily consumption is 15.5. Daily consumption दिया हुआ है ना उसने 0.3 kg. No, sir. After this, after calculating shaft power. After calculating shaft power at 10 knots 8.9. No, sir. At the previous 12 knot, 15.5. Okay. Yeah, initial was 15.5, yes. सर बता दो ये वाला सर कैसे करें? यहाँ पे जो पावर है that is the effective power. It is given. The effective power of a ship is 1400 kilowatt. Correct. So this is the power available here. At 12 knots. So also given B1 at 12 knots. So what is given is effective power, which is 1400 kilowatt. Efficiency, this propeller efficiency, propeller is 65%. And fuel consumption is equal to 0.3 kg per kilowatt hour based on shaft power. इसका मतलब यह है कि it is based on this calculation of 0.3 kg per kilowatt. This kilowatt is shaft power. उस बेस पे है ये. Calculate the fuel required to travel 10,000 nautical miles. वो अभी 10,000 is the voyage distance. Voyage distance हमें देना है 10,000 nautical miles जिसकी consumption निकालनी है at 10 knots. ठीक है, 10 नॉट पे जाएं तो हमें कितनी कंजम्पशन लगेगी इसको करने में. अब हम आते हैं, ये तो डेटा है इसलिए पहले ये लिखना जरूरी होता है कि क्या है हमारे पास. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. दिस इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. नाउ लेट अस सी हाउ व्हाट वी कैन कैलकुलेट. वी नो इफेक्टिव पावर. अगर इफेक्टिव पावर पता है तो आई कैन कैलकुलेट द थ्रस्ट पावर और नॉट. फर्स्ट थिंग आई नीड टू कन्वर्ट from here to thrust power. I need hull efficiency, correct? लेकिन hull efficiency is not given. कहीं दिया है hull efficiency? नहीं दिया है. So first thing I will do is assuming hull efficiency 100%. If my hull efficiency is 100%, that means no hull losses.
क्योंकि दिए नहीं है इसलिए मैं निकाल ही नहीं सकता उसको। देयरफॉर इफेक्टिव पावर इज इक्वल टू थ्रस्ट पावर। पहली चीज तो ये हमने कर ली। इतना बड़ा क्यों हो गया ये? हाँ वापस हो गया। सो नाउ I can calculate delivered power. Delivered power will be thrust power divided by efficiency. Efficiency 65% पता ही है, तो 0.65 से डिवाइड कर दो। Effective power was 1400 given. इसका मतलब है 1400 ही मेरी हो गई thrust power, क्योंकि मैंने efficient no losses, so same मैंने ले लिया है। So I will say thrust power 1400 divided by 0.65 is the delivered power in kilowatt. कितना आया? साथ देख। Sir, 2153.85. 215 2153.85 किलोवाट। तो ये आ गई मेरी डिलीवर्ड पावर यहाँ पे एट दिस पॉइंट, डीपी आ गया। अब हम देखते हैं, हमें निकालनी है यहाँ पे शाफ्ट पावर एसपी। ये शाफ्ट पावर के लिए मुझे चाहिए ट्रांसमिशन लॉसेस। अब इसमें न्यूमेरिकल में देखो कहीं दिया है ट्रांसमिशन लॉसेस? कहीं नहीं दिया हुआ है ना। सो एज्यूमिंग नो लॉसेस। ये नो लॉसेस ये सिर्फ थियोरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकल भी होता है। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे मान लो जनरेटर है, डीजल इंजन से लगा हुआ, तो ऑल्टरनेटर बीच में कोई लॉसेस थोड़ा होते हैं, वही एक साथ साथ ही तो होते हैं ना बिल्कुल। जहाँ जनरेटर की शाफ्ट खत्म हुई, ऑल्टरनेटर की शाफ्ट शुरू हो गई, कोई लॉसेस ही नहीं है। ऐसे यहाँ ट्रांसमिशन लॉसेस नहीं है। तो ऐसे इसमें क्योंकि दिया नहीं है, हम मान रहे हैं कि छोटा सा जहाज है, छोटा सा इंजन है ना, 1400 किलोवाट तो सारा ही है। इट इज लाइक ए लाइफ बोट इंजन ओनली। हो सकता है लाइफ बोट का ही हो ये क्वेश्चन। चलो तो एनीवे, नो लॉसेस, इसका मतलब हो गया डिलीवर्ड पावर एंड शाफ्ट पावर इज सेम। तो यहाँ मैं ऊपर आ गया उसके स्लाइड के सबसे ऊपर। देयरफॉर डिलीवर्ड पावर इज इक्वल टू शाफ्ट पावर इज इक्वल टू, ये आपने निकाला हुआ, ये 2153.8 2153.85 किलोवाट, ये आपका आ गया शाफ्ट पावर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है डेली कंजम्पशन DC1 कंजम्पशन क्या होगी हमारी 0.3 kg, 0.3 kg है, मल्टीप्लाइड बाय पावर 2153.85 डिवाइड बाय केजी की जगह हमें चाहिए टन में ना, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये टन हो गया। और ये जो कंजम्पशन है पर आवर है ना, किलोवाट पर आवर, लेकिन हमें डेली के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी मेरी टन्स पर डे में। तो इसको जरा करके बताइए कितना है। 8 पॉइंट कुछ आया था ना शायद, सर 15.5 15.5 डेली कंजम्पशन वाला 15.5 ना, टन्स पर डे आ गई, tons per day. जो भी है 15.5014 जो भी आया। बहरहाल ऐसे करके हमने डेली कंजम्पशन निकाली। ये किस पे है? एट ये इतने आरपीएम पे है, 12 नॉट पे है, एट 12 नॉट्स ना, 12 नॉट्स पे हमें रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ जी, डेली कंजम्पशन एक बार रिपीट करेंगे। 0.3 इंटू, हाँ देखिए 0.3 उसने न्यूमेरिकल में दिया है, 0.3 kg पर किलोवाट, यानी 1 किलोवाट अगर पावर हो तो मेरी 0.3 kg पर आवर होगी कंजम्पशन। एसएफओसी का क्या होता है, वहाँ ग्राम्स में लेते हैं ना हम, ग्राम्स पर आवर फॉर 1 किलोवाट, यहाँ भी वही है। लेकिन हमारी पावर कितनी है? 2153.85 किलोवाट है। तो अगर 1 किलोवाट के लिए इतनी है, तो 2153.85 किलोवाट के लिए कितनी होगी? 0.3 मल्टीप्लाइड बाई पावर, और 1000 से डिवाइड इसलिए क्या है कि हमें डेली कंजम्पशन टन में चाहिए, तो ये केजी में है, केजी डिवाइड बाई 1000 विल बी टन्स, और है पर आवर इसलिए 24 से मल्टीप्लाई किया। ये सब करके हमारे पास आ गई टन्स पर डे में 15.5। क्लियर है? इज इट ओके? हाँ जी सर। अब ये आई हमारी 12 नॉट्स पे, ये 12 नॉट्स पे है ये सब कुछ। अब हम DC1 बाई DC2 फार्मूला लगाएंगे।
What is DC1 by DC2 formula? DC1 by DC2 is equal to delta 1 delta 2 raised to power 2 by 3 into V1 cube by V2 cube. लेकिन ये तो है नहीं, हमारा सेम ही है, डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो DC1 हमें पता है, जो अभी निकाला हमने 15.5, DC2 निकाल लेंगे हम। V1 V2 पता है, V1 is 12, V2 is 10, है ना। हमने तो 10 नॉट पे चलाना है ना इसको बाद में। कैलकुलेट द फ्यूल कंजम्पशन रिक्वायर्ड टू ट्रेवल एट 10,000 नॉटिकल माइल्स एट 10 नॉट्स। तो हमें 12 नॉट पे पता है कंजम्पशन, 10 नॉट पे निकाल लेंगे ये वाले फार्मूले से। और डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हुआ नहीं, हमने बीच में जहाज में कोई कार्गो लोड किया नहीं, ना कुछ किया। सो DC1 by DC2 इज इक्वल टू V1 by V2 क्यूब। DC1 भी पता है, DC2 भी, DC1 पता है, DC2 नहीं पता है, V1 पता है, V2 पता है। तो हम निकाल लेंगे V2, सॉरी DC2। DC2 हमें पता चल गया, तो 10,000 माइल divided by 10 divided by 24 is the voyage days multiplied by this consumption जो हमने DC2 निकाली है is the voyage consumption। तो सर इसको वॉइज कंजम्पशन वाले फॉर्मूले से भी तो हो जाएगा ना सर ये सीधा? voyage consumption से VC1 by VC2 equal to V square V1 square V square 2। उससे निकाल लो, उससे निकाल दो, एक ही बात है। voyage consumption में आंसर कितना है? और अब इसका आंसर आ रहा है 373.9। 373.9 करेक्ट। voyage consumption 373.9। मैंने तो आपको एक तरीका बताया कि ये इस तरह से निकल आएगा, और बाकी आप जो मर्जी जितने मर्जी तरीकों से निकाल लो, 373.9 आना चाहिए। 373.9 दिस इज द voyage फॉर दिस डिस्टेंस एट 10 नॉट्स। तो इसमें 10,000 डिवाइडेड बाई 10 तो करना ही है हर हालत में, हमें नंबर ऑफ डेज तो निकालना है ना। 10,000 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 24 तो वॉइज डेज आ ही गए, मल्टीप्लाइड बाई डेली कंजम्पशन। हाँ, अगर वॉइज कंजम्पशन फार्मूला निकालोगे तो दो वॉइज का डाटा चाहिए आपको। चाहे आप पहले में एक वन डे वॉइज ले लो, वन डे वॉइज के लेंगे तो 12 नॉट्स में एक दिन का डिस्टेंस निकाल लो, और फिर आप सेम चीज़ है उसमें। आई डोंट सी एनी डिफरेंस इन बोथ, जैसे मर्जी कर लो। लेकिन ये सब कार्रवाई करनी पड़ेगी। DC1 ये जो अभी तक हमने सब निकाला है वो निकालना पड़ेगा। ओके, सो दैट कंक्लूड्स टुडेज सेशन and all the best and see you। As far as today's session is concerned, we have completed. All right then, thank you so much, and I'll see you next week, because I don't think I have tomorrow any class or day after. So see you, bye। Thank you। यार कोई आंसर रिपीट करेगा इसका? कितना कंजम्पशन आया था टोटल? $373.9। ओके,